You can guess कि अच्छा I think ये dialogue पर थोड़ी सीटी बजेगी. I think, and then just do it. ये एक 10 एपिसोड की सीरीज है जिसमें आपके पास वक्त है कि उन सारे जवानों की जिंदगी जो है, पर्सनल लाइफ भी जो है, उसको आप टच कर सकते. मैं 4 बजे उठ के एक्सरसाइज कर रहा था, फिर शूट कर रहा था. 2 दिन किया, तीसरे दिन पता नहीं क्या हुआ, मैं वेट कर रहा था वैन में और मेरा जो लड़का है उसने आके बोला कि भैया आप थोड़े नीले लग रहे हैं. क्योंकि मुझे लगता है कि जो लाइनें डायलॉग होती हैं जिनको सुन के लगता है कि ये तो पॉपुलर होंगी, सीटियां बजेंगी, उनको अगर आप और ज्यादा ड्रामेटिक वे में बोलो तो फिर वो डायलॉग नहीं रहते. The issue with the movies I chose to do, because they were not considered mainstream, they were not considered formula, they were not considered something that people would like. मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं ऐसा कोई काम करूं, ऐसा कोई रोल करूं जिसमें मुझे एक्शन करने का मौका मिले, और वॉर सीरीज से ज्यादा एक्शन कहाँ आप कर सकते हैं. Abhay, pleasure having you guys with us on Bollywood Hungama. Hi, And so, Abhay, the moment I saw your name in the credits of this series, 1962, The War in the Hills, my perception was that if Abhay Deol is there, then it must be a different war series. Well, it's a series. I don't blame you. Mahesh ji and I have mostly done films. Right. So it's normal. Is it different? Well, I'm not someone who's very pro-war. I wouldn't do something that glorifies war and as a solution. And we lost the war with China. This is the one battle we won. And Mahesh ji from the beginning has been of the view that I want to show the impact that war has on the soldiers, on their families, on the community. I want to highlight that. I'm not so much about glorifying the action, the nation, or anything. I'm here just highlighting the impact, the physical, psychological, emotional, mental. So I think in that sense, you're right, Faridoon. It is different from a lot of films based on war, which just tend to be all about nationalism and strength and push us towards, pride in fighting back. And this one says, that's fine. We can be proud of our culture. We should be proud of our nation. But is war a solution? And can we just look with empathy towards the people in it and the people across who are fighting us as well? Of course. Because after all, they are also separated from their families. They also suffer death. So it doesn't go too much into the other side, but it shows empathy towards both sides. Right. And Mahesh ji has also said in the behind the scenes that it's more than a series. I'd like to think so. Too. I don't know how. Maybe the subtext that you're talking about, the futility of war or something. Yeah. It has a philosophy, and that's important, I think. And not a lot of people come in with the philosophy. They come in with a tact, which has to be there, but there may or may not be a philosophy behind it. And I think that's where Mahesh ji's sensitivity really comes through. Anup ji, kaisa tajurba tha aapka इसमें काम करने का? Because once again when Anup Soni is coming into this, even आपकी भी एक विचारधारा है, आपकी भी एक सोच है, आप लिखते भी हैं, you're a writer as well. नहीं, राइटर तो नहीं हूँ. राइटर हमारे दूसरे फ्रेम में है. सुमीत व्यास. लेकिन आपको शायरी वाली का शौक है, आपको you like reciting. पढ़ता हूँ और बहुत बहुत एक्साइटिंग था, बिकॉज मैं इस पूरी सीरीज में महेश जी ही एक कॉमन फैक्टर थे, क्योंकि मैं उनके साथ पहले काम कर चुका था एक फिल्म में. सो मैं उनको जानता था. उसके अलावा मैं इस सीरीज से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को नहीं जानता था, ना एक्टर्स को, मतलब पर्सनली जानता था, लेकिन काम साथ में नहीं किया था कभी भी. तो वो एक एक्साइटमेंट था. और दूसरा ये था कि जैसा अभी अभय ने कहा कि ये सिर्फ उस चीज को डील नहीं कर रही थी कि मतलब जो डायलॉग बाजी होती है वॉर सिनेमा में, और मतलब जो मैचरिज्म होता है, और मर मिटेंगे, मर जाएंगे देश के लिए, वो भावना है. लेकिन उस भावना के पीछे जो आपके आसपास जुड़े हुए लोग हैं, उन पर क्या असर हो रहा है, उनकी जिंदगी पर क्या असर हो रहा है, इस बात का, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था इस पूरी सीरीज में, जो कि हम आसानी से शायद डायरेक्टर दिखा भी पाए, राइटर लिख भी पाए, बिकॉज इट वाज नॉट अ 2 आवर्स फिल्म. ये एक 10 एपिसोड की सीरीज है जिसमें आपके पास वक्त है कि उन सारे जवानों की जिंदगी जो है, पर्सनल लाइफ भी जो है, उसको आप टच कर सके, उनके बारे में जान सके, उस साइकी के बारे में जान सके कि जब एक फैमिली में एक आदमी वॉर पे जाता है, अपनी फैमिली से अलग होता है, तो उसकी फैमिली पर उसका क्या इम्पैक्ट होता है. वो भी एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट है, मुझे लगता है हाईलाइट करना, क्योंकि ये तो बहुत पॉपुलर चीज है ना, देश के लिए लड़ना,
आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत लोग शोर मचाते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी आदमी खुद गन लेके नहीं जाता है वॉर बॉर्डर पे। जी जी तो आई थिंक ये हाईलाइट करना बहुत जरूरी है कि अगर ये अवॉइड हो सकता है वॉर, तो दैट विल बी मच बेटर इन फॉर एनी कंट्री। एक डायलॉग भी है प्रोमो में कि या तो तिरंगा आई थिंक लहरा के आऊंगा या फिर तिरंगा में लिपट के आऊंगा। तो वो आई थिंक ऑडियंस को सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जो फैमिली है आई थिंक जब वो उस डायलॉग को अगर सुनेंगे तो आई थिंक इट मस्ट बी टेरिबल फॉर देम, जस्ट अ थॉट। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ओके सुमित, आपने जिक्र किया है कि यू हैड अ टफ टाइम इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग फॉर दिस सीरीज। Yes. And the terrain and the entire experience. So would you want to share a few things, because you are this funny man, but you're getting into a zone which maybe I think you've not done before. Yeah, I mean on camera I haven't really done much serious stuff, but yeah, it was great. It was I hadn't done much of action before, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं ऐसा कोई काम करूं, ऐसा कोई रोल करूं जिसमें मुझे एक्शन करने का मौका मिले, और वॉर सीरीज से ज्यादा एक्शन कहाँ आप कर सकते हैं। तो उस लिहाज से अच्छी तैयारी रही, हमने वर्कशॉप्स की, फाइट की, एक अलग किस्म की ट्रेनिंग थी, क्योंकि ये वो गुंडों वाली फाइट नहीं है, ये एक अलग किस्म की वॉरफेयर वाली फाइट है। जो पहला शेड्यूल हमने किया वो लद्दाख में किया, तो वहाँ की अपनी एक उस टेरेन की अपनी एक मुश्किलात होती हैं, वो मुश्किल टेरेन है ना सिर्फ घूमने फिरने के लिए, और अगर आप एक्शन सीरीज वहाँ शूट कर रहे हैं तो वो और ज्यादा टफ हो जाता है। मैं थोड़ा उस में था कि मुझे ट्रेन करना है और मुझे अपने शरीर को एकदम लोहा बना देना है एक सोल्जर लगने के लिए। तो मैं पूरा एक वो लेकर आया था अपना कि मैं सवेरे उठूंगा और इतनी एक्सरसाइज करूंगा और फिर उसके बाद मैं शूट करूंगा रात को आके इतना। तो 3 दिन के बाद जो है मेरा काफी भरता बन गया वहाँ, क्योंकि मैंने रियलाइज नहीं किया कि वो काफी एक्सर्टिंग होता है, वो ऑक्सीजन जब कम होती है। तो मैं 4 बजे उठ के एक्सरसाइज कर रहा था, फिर शूट कर रहा था। 2 दिन किया, तीसरे दिन पता नहीं क्या हुआ, मैं वेट कर रहा था वैन में और मेरा जो लड़का है उसने आके बोला कि भैया आप थोड़े नीले लग रहे हैं मुझको। मैंने कहा हाँ मुझे लग रहा है कि ज्यादा हो गया। देख बाहर कोई है तो नहीं, अभी टाइम है। उसने कहा हाँ अभी आई थिंक बाहर सेटअप चल रहा है। बोला बताना मत किसी को, कोई फोन करो, कोई गोली दो मुझे। तो then next few days I took it a little easy because we were anyway shooting, and there was in itself a little bit of a strenuous exercise. Of course, now Abhay, there's a dialogue when you're told that Hindi चीनी तो भाई भाई हुआ करते थे, and आप कहते हैं कि bye bye. So now in your career, you've had several films. Obviously, you are known for this thinking, brooding actor with a lot of subtext and all those things. But you've had several films where you've had dialogues जिसपे कि आपको proverbial theater में तालियां मिलती हैं, सीटियां मिलती हैं, and this is one of those dialogues. Do you enjoy such moments? It's always fun to get a dialogue that you know will kind of stand out. Right. It's an indulgence. I don't think too much about them. You can guess कि अच्छा I think ये dialogue पर थोड़ी सीटी बजेगी. I think, and then you just do it. And then I sometimes make an extra effort to play it down a little bit, because if it's already over the top, then you don't want to play it over the top. You want to play it down, so that it'll stick as real. You know, you're not pandering to the audience. So that's at most I think that. But then you just treat it like everything else, and you say it as realistically as you possibly can. You know, I think that's the strange thing with dialogues, Abhay. I really like the way you said that dialogue. You know, what you said just now, I very strongly believe in that as an actor. क्योंकि मुझे लगता है कि जो लाइनें डायलॉग होती हैं, जिनको सुन के लगता है कि ये तो पॉपुलर होंगी, you know, सीटियां बजेंगी, उनको अगर आप और ज्यादा ड्रामेटिक वे में बोलो तो फिर वो डायलॉग नहीं रहते। हाँ, already over the top है dialogue. Notice the most iconic dialogues of Mr. Bachchan के, you know, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, उन्होंने इतना नॉर्मली बोला है फिल्म में. If you see 1970, but आज किसी को बोलो वो डायलॉग बोलने को तो वो सब ऐसे हो जाते हैं, डॉन को पकड़ना मुश्किल, उसमें बहुत सारा और ड्रामा. So I think that is, you said it was also. Yeah. I think that's because that dialogues become so iconic, the Dawn dialogue, that people then are aware of it being such an iconic association. Yeah. And then that plays through in their performances. Yeah. It'll be nice. Anup ji, talking about dialogues. Recently, अभी आपकी एक series आई थी तांडव, और certain dialogues जो आपको involve कर रहे थे, even they became quite controversial. वो कट गए सारे dialogue मेरे फिर बाद में. अच्छा. So, as an artist, एक हफ्ते के बाद कट गए सारे dialogues. As an artist, now when you are approached with the dialogues, and
various. So do you think twice before agreeing to them? See, ऐसा नहीं है. मुझे लगता है कि मैं हमेशा से मानता हूँ कि एक्टर्स को थोड़ा अवेयर होना जरूरी है. मैं ये नहीं कहूंगा कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टर्स की है, बट हमेशा से मुझे लगता है कि कभी ना किसी चीजों को अननेसेसरी नहीं छेड़ना चाहिए. तो एज एन एक्टर मैं अवेयर रहता हूँ कि क्या किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ गलत उसमें था नहीं जो हुआ, मतलब जो मेरे पर्टिकुलर कैरेक्टर में चला. बिकॉज अगर देखा जाए तो मैं तो खुद विक्टिम था उस मेरे किरदार के हिसाब से. बट एनीवे, मुझे लगता है कि एक्टर्स, एज एन एक्टर्स, हम सब थोड़े अवेयर रहते हैं इन चीजों को लेकर कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल वी हैव द नॉलेज ऑफ दैट होल सब्जेक्ट, उसके बारे में. तो मुझे लगता है कि थोड़ा अवेयर होना जरूरी है एक्टर्स को. Or what do you think, Abhay? You're known to be outspoken. Do you think that it's time for more self-censorship? I think it's whether now or any time before this, it's important to engage in dialogue that will be productive. There's a point in saying something about a set, about a story, and as celebrities, we're more vulnerable because suddenly the stories become something else and now you become the story instead. How is that productive? It might be great for you to get appreciated for taking a stand, but then if you become the story and the issue still remains, then all you've done is deflected from the issue and made yourself the story. So I wouldn't talk in terms of is it time for self-censorship. I would say in terms of how can I be constructive. I remember Anup had said this in another interview. It's like, if you don't say anything, they say, why are you being quiet? And if you say something, they say, well, you're an actor, shut up. So I think it's important to hold your dignity. That's most important, you know. Hold your dignity, that's what I said. And then say things that can be productive. If it's not going to be productive, don't say anything at all. And don't listen to the trolls. They don't matter, really. The amount of times people say, I'm unfollowing you and you need us. And I'm like, I've never played to numbers before. Why am I going to play to numbers on my Instagram page? You know, and if I can be productive, I'd rather be productive quietly behind the scenes than be vocal and unproductive in front of them. All right, Sumeet, you also are known for your jokes and being a funny guy. So do you personally plan to be more careful when it comes to jokes and humor in your content? I think it says a lot more. Sorry, sir, if I can address this question, Sumit. I think it says a lot more that you have to ask us these questions. It speaks of the times. No, but you know, these are I'm asking in all seriousness that because I know you are. I'm not taking that away. I'm seriously to get offended. But I'm saying that taking the seriousness of your questions, the fact that you as a journalist also have to ask these questions. You know what I mean? It just speaks of the times that this is something now to speak about. So you're in it as much as we are. Sumeet, yeah, when it comes to humor and jokes, do you think that as an artist, you're being careful? I mean, I am generally very careful about what I say, and even when stuff sounds like I'm not careful about what I'm saying, I'm more careful and I make it sound like I'm not. But yeah, I mean, people have a lot of time, you know, to get offended. Like I've never found time to get offended. How about, you know, I am offended by the fact that you're offended by what I said, you know. So now what do we do about this situation? It's pathetic, you know. I never thought, yesterday only I was thinking that when is the last time I got offended so badly by something I saw or read that I wanted to just, you know, like march or like hire a lawyer and then file a petition and you know, do the whole hog. I mean, in India, we keep complaining about bureaucracy कि अरे यार मेरे को राशन कार्ड बनवाना है या आधार कार्ड बनवाना है तो उसके लिए इतना टाइम लग जाता है. And in this system of bureaucracy, if I found time that I've gotten offended and I've hired a lawyer and then I've filed a petition and I've gone the whole hog, firstly, I need to check then, you know, the system needs to check how authentic that thing is. तो उनका राशन कार्ड आधार कार्ड बन चुका होगा ना. हाँ. इतना टाइम है आपके पास कि आप बैठ के सारा सोच रहे हैं. Right. So Abhay, talking about the show once again, there's this dialogue which says that India Pakistan के कोई मसले नहीं रहेंगे because the entire Kashmir will be with China. So how do you look at this series vis-a-vis the current situation that we have? Well, it's important to keep a dialogue going, as I said. History can serve as a great marker of, okay, where were we in the past? What happened? All right. What came about that? Did it solve anything? Are we still dragging the same issue? How did we deal with that issue back then? And so it'll give us an idea of how to perhaps deal with it in the moment right now.
if you know what I mean. Of So, course. and every situation, times change. Today is the day of social media, and we've been discussing that now a lot. And so you have to measure yourself. And like I said, at the end of the day, whether you talk about censorship and self-censorship, whether you talk about trolls and offending or having an FIR filed against you, I think the important thing is, how can I best be productive with this? Because there's no point in going through all that trouble if the issue will never be solved and you don't want to become the issue. So that is something unique to our times. So you have to Of find your course. voice somehow. You Okay, do have now, to find it. right now, Abhay, you've had several films. They've been outstanding films, and it's been many years. Unfortunately, quite a few of those films, they did not get a proper release. They could have reached far more people. Now, I'm saying in all objectivity, the platform that you are coming out this series with, it has a tremendous reach. It's got a brilliant reach within India, especially. It percolating to the smaller cities everywhere. So the moment this series is aired, it will be reaching. It will be, you're assured of a huge chunk of people who will be accessing this series and will be watching it as well. As an artist, does it is that thought exciting for you, because your work that you've worked so hard on will be reaching to at least a certain number of people, and that is a big number. I'm not. I'm glad that it's a platform that will take this work and reach out to so many people. Of course, I am, because that's always been, as you said, the issue with the movies I chose to do, because they were not considered mainstream, they were not considered formula, they were not considered something that people would like. Yes, it feels good that here now, at least something that I've done will have the reach that it should. Because I don't have to now turn around and say, well, I didn't get the numbers of screens, so how can you say this was a failure? It was set up to fail. So it still doesn't prove to me that what I did was futile or was not in keeping with people's tastes, because people need to taste it to tell you whether they like it or not. They just never got a chance to taste it. So it's nice to have that opportunity for sure. All right, now Anup ji, film में हम ये series में हम लोग we are having vignettes of Prime Minister Nehru and yes, Indira Gandhi as well. So you think एक generation के लिए एक काफी interesting एक prospect हो सकता है to just maybe see how they work together, because Indira Gandhi was still not into the mainstream politics in terms of, she was still just helping out her father. Do you think एक audience के लिए एक interesting चीज हो सकती है? See, I think it's like kind of knowledge, it's like kind of information, जो आप शायद किताब में पढ़ते हैं, लेकिन सीरीज के बहाने आप हमेशा कहता हूँ कि कुछ सिनेमा जो है वो अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है किसी भी चीज को प्रमोट करने के लिए या कोई भी बात कहने के लिए. तो उसी तरीके से जब हम किसी हिस्टोरिकल फिगर पे कोई एक फिल्म देखते हैं तो हमें उस फिगर के बारे में जानने को मिलता है. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ये है कि कहीं ना कहीं आप उस चीज से जुड़े रहते हैं. जैसे हमने शायद एक जनरेशन ऐसी है जिसने शायद उस दौर के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे या नेता थे उनके बारे में सिर्फ एक स्कूल कॉलेज के फंक्शंस में उनकी दीवार पे फोटो देखी है. वो कैसे थे, क्या वो एक्चुअल में थे, क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमें हिस्ट्री के जो पहले वाले लोग थे वैसा लगता था अच्छा ये थे ना, या ये सिर्फ किताबों में ही है. तो उस तरीके से अब की जो जनरेशन है उन्होंने इनके सिर्फ नाम सुने, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जब ये सीरीज देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि हाँ यार ये रियलिटी है, ये लोग जिंदा थे, ये कहानियां हैं, ये सच है, ये किस्से. तो एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, एक जानकारी मिलती है, और उसी बहाने अगर यू नेवर नो कि कुछ बच्चों का इंटरेस्ट पड़ता है पढ़ने में और कि चलो और जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि उनको शायद लगता है कि यहाँ कोई 10 एपिसोड की सीरीज में कोई चीज कमी रह गई है, ये तो ड्रामेटाइज्ड वर्जन है, सो व्हाई नॉट जस्ट गो एंड रीड अबाउट इट लिटिल मोर इन डिटेल. सो आई थिंक एक क्यूरियोसिटी तो बनती है किसी के दिमाग में. ऐसे ही इंप्रेशंस भी बनते हैं. जब हम छोटे होते हैं तो हमारे जहन में भी इंप्रेशंस बनते हैं कि हमने बचपन में कुछ देखा था, उसका क्या इम्पैक्ट हमारी जिंदगी पे हुआ. सो वी जस्ट होप दैट कि इस सब का जो भी कोशिश है इस सीरीज की, जैसा अभय ने भी कहा, महेश जी ने भी कहा कि इट्स अ वॉर सीरीज बट इट्स नॉट जस्ट अ वॉर सीरीज. तो जो एक पर्पस है, जो एक मैसेज देने की कोशिश है, जो इम्पैक्ट है, वो आने वाली जनरेशन पे होगा तो डेफिनेटली उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा. तो हम we have a winner in that. All right, so thank you very much. Looking forward to the series. I think it's looking really interesting, especially after talking to you guys. And happy birthday to you in advance, Abhay. When is it? It's in next month. Next month. Yeah, okay, fine. March. Thank you. March, yeah. Yeah. All right, so thank you very much and all the best wishes. Thank you.
Thank you. Thank you. Take care. Thank you. Bye bye.